Hello, everyone. Welcome to ELI, the place where you get your daily dose of inspiration for entrepreneurship. And today we have with us Mr. Shammi Agarwal, who is the director of Pansari Group, which is a 5-decade-old company manufacturing edible oils, rice, spices, ready mix, and atta. Hi, Shami. Welcome to ELI. Hello, Priyanji. Thank you very much for this opportunity, and I'm glad to be part of ELI. I would request you to introduce yourself to our audience. Tell us a bit about your background. Where are you born and brought up? And prior to joining the family business, what all things did you do? Yeah, hello everyone. Myself Shammi Agarwal. Currently, I'm the director of Pansari Group of Industries. We are the leading manufacturers of edible oils, rice, spices, and flours. If I talk personally about myself, I'm born and brought up in Delhi, and blessed to have a good experience of traveling. Like I was in hostel for class 9th and 10th, and for graduation, I went to Australia. I did my graduation from Monash University, Australia, for 3 years. आफ्टर दैट लाइक आई कम फ्रॉम अ डिसेंट बनिया फैमिली तो होता है ना कि बनियों में जल्दी बिजनेस में बिठा देते हैं बट आई वाज ब्लेस्ड कि एमबीए भी करी मैंने फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ सो आफ्टर एमबीए रादर वाइल विद इन माय जॉब प्रोफाइल सॉरी विद इन माय education as well I did little few part-time works when I was a student so after my MBA I sat for placements and all but एक zeal थी पहले से ही फैमिली बिजनेस में आने की and to create a brand like we if I talk about my family business they are primarily into manufacturing of edible oil so when I started that was in 2010 2011 I joined my family business as a you can say undisguised unemployment कि जा रहे हैं और पता नहीं लग रहा हम क्या कर रहे हैं for a good couple of months 3 months कि होता ना कि भाई जाओ देखो क्या हो रहा है Right. then that time we still do private label for a lot of big brands and अभी भी हम करते हैं मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स का प्राइवेट लेबल एंड देयर वाज अ मेजर थिंग कि हम प्राइवेट लेवल के बिग ब्रांड भी कर रहे हैं एंड वी सेलेक्ट इन लूज टैंकर्स ऑल ऑयल को बेचते हैं तो वी ऑलवेज वांटेड कि हमारा भी खुद का ब्रांड हो यू नो कि पीपल एक की कोई पहचान से अच्छे से जाने दो Mm-hmm. नेम वाज देयर आई थिंक अगेन फैमिली बैकग्राउंड फैमिली बैकअप वाज देयर बट brand wise it was not that consumer accepted brand so I took that as a challenge कि चलो ठीक है let's start let's see and let's see how we go पीछे बैकएंड में तो फैमिली आई Mm-hmm. I think the best thing when I started was you can say family support कि हाँ ठीक है उन्होंने they motivated me कि ठीक है let's do it and let's try. So I remember after 1.5 years 2 years you know घर में देखा था क्या कमाया क्या बचा and it was all negative. There was a lot of bad debts. There was like कि जहाँ माल दिया पेमेंट नहीं आ रही अभी भी आज के डेट में भी ये दिल्ली में कहते हैं ना कहावत है आज दुकान है कल दीवार है Mm. कि माल पेमेंट लेने आज दुकान है जब माल उतार ली पेमेंट लेने जाओ तो दीवार बन जाती है वो Right. तो या बट दैट टाइम आई रिमेम्बर माय डैड मतलब वी हैव अ जॉइंट फैमिली मेरे पापा के बड़े भाई ताऊ जी ने बोला कि एक फीस तो लगती है तो अब बेटे ने फीस लगा ली अब तो सीख गया काम तो लेट्स सी तो आई थिंक दैट सपोर्ट व्हेन समबडी is behind you that and they're showing trust in you faith in you so that motivated me further and after that I never turned back I think from nowhere from team size of 3 now we're handling over 1,000 people in the Mm-hmm. same dimension in just 10 years and God is really kind that we are the largest market we have the largest market share in Delhi NCR and even in North India. Mm-hmm. So yeah, things have been good after that, and yeah, so that's pretty much about me. I would say decent educated, Mm-hmm. uh, good. I was good in academics, but more towards मतलब I enjoy talking to people more. So that's how it learning comes. And my personal belief is learning never stops. कि अगर जहाँ पे आपको Right. लगेगा learning stop हो गई है तो वहाँ पे it's like your कहते हैं ना कि you have people say adopt with the change keep changing it's not keep changing it's about keep learning what is going across and then keep adopting accordingly Mm. so yeah after joining business as well I did a few courses like एक बड़ा famous course है दिल्ली में business coach India का राहुल जन का Mm-hmm. then I मतलब there was a need of an hour कि भाई how to automate your business how to you know operational भी free कैसे हो कैसे team manage करनी है कैसे brand build करना है then I did a branding course digital marketing so every couple of years I try to do one new learning and I try to implement it that is very important like what these generations आज के लोग क्या कर रहे हैं सब एक फोमो हो गया you know fear of missing out Mm-hmm. कि
इसने कर लिया, अच्छा मुझे भी करना है। नो, दैट्स नॉट, दैट शुड नॉट बी द केस। यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि क्या चाहिए एंड क्या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। डू इट ओनली व्हेन यू कैन इम्प्लीमेंट इट, अदरवाइज सिर्फ ज्ञान तो यार यूट्यूब में दुनिया भर का है। Yeah. Got it. So that's about pretty much about, if you talk about personally me, that's how मतलब what I have been in my past, and yeah. हम्म। ये पंचरी इंडस्ट्रीज का इंसेप्शन के बारे में थोड़ा बताइए कि व्हेन इट ऑल बिगन, हु स्टार्टेड इट, व्हाट वाज द फर्स्ट बिजनेस दैट यू स्टार्टेड, दैट द होल फैमिली बिजनेस स्टार्टेड विद? Like if I talk about my great grandfather, they used to have a small shop in Rajasthan, and उसी स्मॉल शॉप का नाम ना पंसारी, जैसे परचूनी की दुकान को बोला था पंसारी की दुकान, तो वहीं से हमारा नाम पंसारी की दुकान से पड़ गया था। So my grandfather increased it to further a bigger shop, मतलब है ना, generation by generation. हम्म। So when my parents, मतलब my my father and his brother joined the business, हम्म। so that time it was all wholesaling, and they started trading interstate. And while trading interstate, I remember there is sesame sesame seeds. जैसे हम्म। I'm talking about 1980s. कि सेसमे सीड्स एक तिल्ली का तिल्ली होती है, जो हम्म। ट्रक्स के टाइम, मतलब वाइल ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम कैलकाटा टू, हमारे रूट्स राजस्थान में भी स्ट्रॉन्ग थे और कैलकाटा में स्ट्रॉन्ग थे, तो वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ राजस्थान गुड्स टू कैलकाटा एंड कैलकाटा गुड्स टू राजस्थान। ये हमारा मेजर मेजर बिजनेस था। तो जब बंगाल तिल हम राजस्थान में या दिल्ली में लेकर आ रहे थे, तो उस टाइम बारिश में तिल को भीग गई, एंड ट्रस्ट मी दैट वाज लाइक अ ह्यूज लॉस फॉर फैमिली। के भी 5 रुपए का माल 3 रुपए का भी कोई नहीं खरीदा, एंड इन गुड वॉल्यूम्स। हम्म। दैट टाइम माय पेरेंट्स, आई थिंक दे डिड अ डेयरिंग स्टेप। दे थॉट कि भैया अगर हम इसको 3 में बेचेंगे, 3 में भी नहीं बिक रही है, तो इट्स लाइक अ कंप्लीट लॉस, एंड जितना भी हमारा सेविंग्स है, कैपिटल, इट विल बी ऑल जीरो। हम्म। सो व्हाट डेयरिंग स्टेप दे डिड वाज कि कह रहे लोग, व्हाट पीपल डू विद दिस सीड्स में, दे मेक ऑयल आउट ऑफ इट। वो तेल ही तो राइट। निकालते हैं इसका, व्हाट एल्स वी कैन वी डू। और तेल भी निकालते हैं हम, देखिए मॉइस्चर करने के बाद पानी वाली करते हैं। So I think that was the bold step in 1990s. My dad, Mr. Kamal Agarwal, my father, Mr. Kamal Agarwal, along with his brother did कि हम लोग भी एक किराए की मिल लेकर उस जो हमारी दिल्ली खराब होगी उसका तेल निकाल के देखते हैं। एंड गॉड ब्लेस दिस कि जो हमारा माल 5 वाला माल 3 का भी नहीं बिक रहा था, वो वी रियलाइज वैल्यू ऑफ 7-8 रुपीज रहा था दैट टाइम। तो ये तेल निकाल के तो हमें आ गया। So from there, they never looked back. They मतलब rented rather 5-6 units across northern India, northern part of India की, इधर भी तेल मिल हमने लीज पे ले ली, इधर भी ले लिया, क्योंकि सीड का काम हम पहले से ही कर रहे थे। एंड वी स्टार्ट विद ऑयल एक्सट्रैक्शन। ऑयल एक्सट्रैक्शन करते करते, बट या अगेन वी वर नॉट फोकस्ड टुवर्ड मेकिंग अ ब्रांड, बट वी आर मेड टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे यू कैन से डीसीएम का, पनघट का, गवर्नमेंट्स में नेफेड का, वी यूज्ड टू डू प्राइवेट लेवल फॉर मेनी बिग कंपनीज। ये उनका हमने ऑयल निकाल करके देते थे। इवन अदानी, व्हेन अदानी वाज लॉन्च, तो माय वी वर द लार्जेस्ट सप्लायर टू अदानी मस्टर्ड ऑयल एज वेल। So from there we had a manufacturing background, but yeah, things were up and down की कुछ चीजें रही भी, बहुत पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकली, जो गवर्नमेंट पॉलिसी में भी, जैसे दिल्ली से पॉल्यूशन यूनिट के चक्कर में बाहर निकालना पड़ा, अलवर में लेकर चले गए। तो आफ्टर व्हेन आई कंप्लीटेड माय स्टडी, आई हैड एन ऑप्शन कि या तो हम ये फूड बिजनेस में जाएं, एंड वी हैव अदर बिजनेसेस, टेक्सटाइल का बिजनेस भी था उस टाइम, हमारा रियल एस्टेट का भी है। बट आई कुड सेंस कि एवरीबडी इन माई होम, मतलब ये ना, पापा चाचा अंकल, एवरीबडी वांट्स कि यार हमारा खुद का ही ब्रांड हो, एंड इफ अ न्यू जनरेशन इज एंटरिंग, तो एटलीस्ट समबडी इज एंटरिंग, तो एक रहता है कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है कि वाई डोंट यू ट्राई इट, एंड देयर इज, तो फ्रॉम दैट वाई डोंट यू ट्राई इट, एंड देयर इज ऑलवेज अ बैकअप, कि पता था कि अगर फेल भी हो गया तो यू कैन गो इनटू डिफरेंट बिजनेस। बट जब व्हेन यू आर एंटरिंग, यू गो विद फुल एनर्जी, एंड इफ यू पुटिंग योर 100% टू एनीथिंग, ये तो मेरा मानना है लाइफ में, इफ यू पुटिंग 100% इन एनीथिंग, इट कैन नॉट बी, इट कैन नेवर बी फेल्ड। तो आई थिंक पहले 2 साल 3 साल बहुत स्ट्रगल था, उसका धीरे धीरे मैनेज टू गेट टीम्स। फिर व्हेन आई वाज, आई थिंक देयर आर फ्यू माइलस्टोन व्हेन आई जॉइंड बिजनेस, दैट इज 2010-11। तो 2-3 साल तो स्ट्रगल था। आई यूज्ड टू मेक, मतलब आई यूज्ड टू बी अ सेल्समैन माई सेल्फ, की मार्केट में जाना भी, सप्लाई भी करना, मेकिंग बिल्स एज वेल। आई स्टार्टेड विद द टीम साइज ऑफ 3 or 4 people। देन 2014 व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, तो उस टाइम लगता है ना कि शादी होने वाली है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुड हैव मोर रिस्पॉन्सिबल पीपल जो पीछे से टेक केयर कर सके आप लोग का। तो आई थिंक दैट टाइम वी हैड फ्यू, आई वोंट से मोर प्रोफेशनल पीपल, बट मोर ट्रस्टवर्दी पीपल, मतलब मोर रिस्पॉन्सिबल पीपल, जिनको हम कहते हैं ना घर का बंदा भरोसे का हमने रखे 2-3।
Hmm. They're still with us. So the best thing is कंपनी में अट्रिशन बहुत कम है एंड दे आर स्टिल विद अस. तो उनको रखकर हमने धीरे धीरे काम को और एक्सपेंड करा. 2014 वाज दैट द मैरिज टाइम. देन 2017 16 दैट कोर्स आई वाज टॉकिंग यू अबाउट द प्रोफेशनल कोर्स दैट आई डिड, द हाउसिंग कोर्स. उसमें उन्होंने बताया कि हाउ कैन यू ऑटोमेट योर बिजनेस, हाउ कैन यू ऑटो बी फ्री, कैसे कैसे डेलीगेट करना है, कैसे और ग्रो करना है. क्योंकि बिकॉज देयर टू थिंग्स, आइदर यू कीप एन आउटसाइड कंसल्टेंट और अदर आइदर यू लर्न एंड देन इम्प्लीमेंट इट योरसेल्फ. Hmm. तो आई थिंक इट्स अ हाइब्रिड मॉडल विच विच व्हाट वी चूज, कि हमने खुद भी सीखा और हमने दूसरा कंसल्टेंट की हेल्प भी ली, प्रोफेशनल्स की हेल्प भी ली. 2017 से हमने फिर कोर्स के बाद आई थिंक देयर वाज अ लिटिल ट्रांजिशंस, मोर फीमेल्स एंटर्ड इन द ऑनटू द ऑर्गेनाइजेशंस. की लगता है ना कि पहले लगता था नहीं, आई थिंक मेल्स आर मोर सूटेड, जो भी चीजें लगता है कि नहीं. Hmm. तो डाइवर्सिटी आने के चक्कर में और अच्छा चीजें हुई. फिर आई थिंक बिफोर कोरोना आई डिड अ ब्रांडिंग कोर्स फ्रॉम बीओडी, मिस्टर सौरभ वेजा. तो उधर सीखा कि यार यू शुड हायर मोर एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल पीपल, कि एजुकेशन डज ब्रिंग लॉट ऑफ थिंग्स. तो उसके बाद हमने थोड़ा प्रोफाइल में एजुकेशन भी लोगों का देखना चालू कर दिया. एंड आई थिंक द सक्सेस स्टोरी फ्रॉम अ नो brand to a market leader is majorly its team, majorly the kind of support I think we give to our team, the kind of clarity we give it to our team. It's like they we are open, we as a company, you won't imagine, मतलब people still call it as a, you can call it as a, because owners driven company is majorly called as a lala company, Hmm. because its owners themselves are working. It's not an MNC की भैया CEO बिठा दिया. But nowadays in an owners driven company, what owners can give to the team, मतलब we are not allowed to call employee or staff, is very much more than what an MNC can give to the team. हमारे ऑफिस में आज के डेट में, लाइक आई माई सेल्फ इज अ लिटिल फोकस टुवर्ड्स फिटनेस, की मुझे लगता है कि नहीं, कि अगर फूड प्रोडक्ट का काम है यार, खुद को तो मतलब ये आई डू लिटिल जिमिंग, रनिंग, योगा वगैरह. तो इन आवर ऑफिसेज वी हैव वीकली फिक्स है कि 2 दिन योगा होना है, 2 दिन एरोबिक्स होनी है, जुम्बा होना है, काइंड ऑफ स्टफ. एंड वी डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग, मतलब इट्स लाइक अ ट्रेनिंग कैलेंडर. जैसे आपका स्कूल में बच्चों का एकेडमिक कैलेंडर बनता है नेक्स्ट ईयर का, वैसे ही हमारे ऑफिस में टीम का कैलेंडर बन जाता है कि दिस ईयर व्हाट विल बी द ट्रेनिंग्स व्हिच डिपार्टमेंट वाइज या ग्रेड वाइज पीपल विल बी टेकिंग केयर ऑफ. Hmm. So this has been a real breakthrough, and this will be the real breakthrough as well, because imagine you are एक तो क्या, being I am myself is working and just catering to say 10 15 100 people, and now 1,000 people are working and they are catering to their 10 15 100 people. Hmm. So the volume of the business, the scale of the business increases. तो I think ये एक बहुत बड़ी मतलब वो रही है. And secondly I think एक positive approach that there has been different times, you see, uh, नोटबंदी आई, बीइंग ब्लेस्ड टू हैव बीन एसेंशियल, कि हमें इतना फर्क नहीं पड़ा. जीएसटी आया, एंड देन दिस कोरोना. सो ऑल द थिंग्स you should take as an as a always a positive thing, कि what is, मतलब कि whatever happens, I believe in karma, whatever happens for good. You just have to be very positive, कि अब अगर नोटबंदी है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, अगर जीएसटी आया तो वी शुड, वो है. देखो कोरोना वाज अ टाइम वेयर you should help society, you should help needy, कि कहाँ पे किसको जरूरत पड़ रही है. तो आई थिंक that time also, I think me and my team, they were like, मतलब it was not work from home for us, it was more towards coming to office. And जहाँ लोग सैलरी काट रहे थे, we were giving 20% extra, क्योंकि हमारा इस टाइम था कि हमें तो सर्व करनी है. we were giving 20% extra, जो भी ऑफिस आके काम कर रहा है. Hmm. So those kind of things, those kind of decisions you have to make in life, and you have to tell your team that be open for mistakes. कि अगर it's not about be open for mistakes, otherwise if everything, if they need approval for everything from you, so it's like it's gonna be, why don't you need smart people, then keep a dumb people, no, just tell them what to do. If you need a smarter people, then you should be open for mistakes, you should give them authority, कि भैया कर लो, अपने हिसाब से कर लो. So I think yeah, Pansari Group by God has been really kind, and it's a well-known brand in North now, and I'm very sure we are doing very good in South. We have opened few depots, and we have opened depots now across India. We have in Gujarat, then Hyderabad, Calcutta. So yeah, things are good. So, in family-owned business, mainly those which have been running for several years. So, one thing that happens is the transition from when one generation takes over from the earlier generation. So, can you tell us about your experience of transition? What were the struggles? What were the hits and misses of transition? फैमिलीज में रहता है कि ट्रांजिशन में, because the mentality, the thought of the generations gap is there.
if you मतलब I'm sure कि we will have that gap with our kids as well. Right. So there are few traditional beliefs which my parents या फिर which every seniors have कि भैया सामने वाला ऐसा है, but I think they are okay, they are making you more conscious. But with me the transition was, since I started with a different division altogether, तो इतना मेरे को देयर वाज नो इंटरवेंशन, बट या गिर गिर के सीखा हूँ, बट स्टिल दे मतलब वो एक रहता है कि नहीं ऐसा क्यों वैसा क्यों, बट इट्स ऑलवेज गुड टू लिसन टू देम, बट यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड लॉजिकली कि हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग. इफ यू सी हम मार्केट में बढ़ते हैं, जोमेटो की वैल्यूएशन इतनी हो गई है, ये डी टू सी ब्रांड इतना हो गया, बट दे आर लॉस मेकिंग कंपनीज Mm. एट दस एंड. इमेजिन अ बनिया फैम, बनिया मतलब बनिया गाय टेलिंग टू योर पापा की कहते हैं कि मैं इस महीने 20 लाख रुपए जलाऊंगा और मेरी वैल्यूएशन इतनी हो जाएंगी. Mm. दे लाइक आर यू क्रेजी और व्हाट? घर का पैसा जलाने का तो चांस ही नहीं है कोई. एटलीस्ट 100 की चीज 100 की बेच लो, बट नॉट 99. सो Mm. इट वॉज वेरी हार्ड एट टाइम्स टू मेक देम बिलीव कि नहीं, शुरू में हमें सस्ता ही बेचना पड़ेगा टू मेक पीपल ट्रस्ट अस, मेक पीपल सैम्पलिंग. तो आई थिंक वी डिड लॉट ऑफ फ्री सैम्पलिंग. तो आई थिंक अगर ट्रांजिशन में है, आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट, अगर इफ यू रियली वांट योर कमिंग जनरेशंस टू लर्न, तो तो लेट देम फॉल, let them Mhm. make mistakes, be open to make mistakes. You can always guide them, but if you don't allow them to make their own decisions, they will never be able to make it. I've got few known peers or friends जिनके साथ चैलेंज है कि अभी पापा के बिजनेस में है, तो दे हैव टू आस्क कि पापा से पूछ के बताऊंगा, ये पापा से पूछ के बताऊंगा. तो फैमिली बिजनेस बिजनेस में रहता है, एंड इट शुड बी अ क्लियर डिवाइडेशन ऑफ वर्क, वेदर देयर ब्रदर्स, देयर फैमिली, ये, और वेदर विद इन टीम एज वेल. यू शुड नो कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन कर रहा है, एंड हु इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल. अदर पर्सन कैन गिव एडवाइस बट दे कैन नॉट लीड इट. तो हमारे में क्लियर था ये, सिंस माय डैड इज टेकिंग केयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, so all the manufacturing decision was taken care, still is taken care by him, but packaging or manufacturing of spice which I take care is taken care by me. So we discuss things ki what is going good, what is going bad, how you managing, how we are managing, because उनका मैनेज करने का तरीका, it's little, I won't say bad or good, but they have their own ways and I have my own ways. We are more close to team because, and पहले होता था पुराने जमाने में नहीं, वो लाला जी and then मुनीमगिरी, but nowadays it's like कि every being a human, you have to sit, eat, talk them like you talking to your friends. So Mhm. there's a lot of transition, but again, if you at the same मतलब respecting your family values, family thing, and at the same time managing your team and doing your independent decision, it's still a tough job. I wouldn't say it's a, but it's doable. Till the time you are sure you have to do it. Look at the bigger picture. The more people trust you, and you have to bring that trust. If you once your family start trusting कि हाँ भाई ठीक है, बंदा is the guy is doing the right job, maybe his type is different, so they'll support. Yeah. Any big challenges or big hurdles you faced along the way, or any major pivots that you have done to your business model? देखो, there were many things, but being a positive guy, if you ask me honestly, मेरे को ना, I don't see challenges. This is a good thing in me. Whatever worst or bad happens or happen, तभी मुझे I don't feel them as a challenge. मुझे लगता है कि now there is an opportunity. Mm. So in your life, never think there's a challenge. Always see opportunity in it. But yeah, there's a tougher opportunity, how to do it and how to deal with it. So it's just like कि uh, in Corona, supply chain was a challenge. At times family को कभी कुछ मनाना is a challenge. It's a challenge. तो हाँ ठीक है कि now there's a task की opportunity है, इनको कैसे समझाना है या फिर कोरोना में कैसे सप्लाई चेन मैनेज करना है. That's an opportunity कि the how you innovate it, the faster you innovate it, the faster you win. Mm. तो ऐसे तो बहुत सारे आई थिंक. देखो इन दिल्ली एनसीआर पहले बिलीविंग मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट योर ब्रांड, टेलिंग आस्किंग देम टू गिव यू एडवांस पेमेंट वाज अ बिग थिंग कि व्हाई दे विल ट्रस्ट यू. तो यू हैव टू बिल्ड योर इमेज अकॉर्डिंगली कि भाई ठीक है, अपना इंफ्रा दिखाओ, मतलब टॉक टू देम, मीट पीपल मोर सो दैट दे ट्रस्ट यू मोर. क्योंकि देखो, I think we are doing this interview over the Zoom. We could have done it over the phone as well, because in the Zoom you can see me, I can see you. The body language speaks too much. So at the same time, Right. the more you meet people, it's like they trust you more. So I think you have to create that trust within the team as well. अभी होता क्या कि people don't talk to the team directly. It's like ये HR से बात कर लो ही. मतलब in our organization we are open for कि हमारे में सीनियर लेवल को रिव्यू उनके जूनियर्स करते हैं. Mm-hmm. मतलब ऑब्वियसली एचओडीज तो करेंगे करेंगे उनकी टीम को, बट जैसे क्रॉस रिव्यूज, तो सो दैट इवन सीनियर्स आर मोर कंसर्न कि भैया कि मेरे को अपने जूनियर को खुश रखना है. दैट्स मोर. तो इट्स लाइक इट्स नॉट
it's not challenging. It's majorly, innovating. It's majorly about how you are adopting things, how you're learning things. And one should always take this as an opportunity कि कितना हम बढ़िया कर सकते हैं, what next, more what more can be done. एंड लाइफ में इफ यू सी एनीबडी मतलब है ना, जो भी हैप्पी है, सैड है, एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी ऑफ द लाइफ. सो यू कांट क्रिप अबाउट एनीथिंग. यार मेरी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में मुझे लगता है अगर हम ही क्रिप करेंगे देन थिंक अबाउट द पीपल हु हैव लेस रिसोर्सेज देन अस. mm, इट्स लाइक कि लेट्स क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड टू देम. तो आई थिंक देर आर बिजनेस डिसीजन विच वेंट रॉन्ग एज वेल. कभी लगता है कि बट इट्स ओके टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स एंड वी स्विच दैट क्वाइट फास्ट. But mhm, as I said before as well, if the team is there, if your thinking is positive, and if you in interviews or in a team, what we tell is the major challenge आता है लोगों का अभी तक कि हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं. mm, मतलब if I talk to मैं यार कि तू कैसे मैनेज करता है, हमें अच्छे लोग नहीं मिलते यार. There is no अच्छा बुरा. If you talk to them honestly, they'll talk to them honestly. right. मतलब सिर्फ समझाना ही तो पड़ता है. मतलब what I tell them कि यार कि मुझे ना everything is allowed, but don't lie. mm, आप समझिए, आप बोला 7 year old डॉटर, अगर मैं उसको भी झूठ बोलूंगा ना सीधे से, पापा आप झूठ बोल रहे हो, mm, तो जब 7 साल के बच्चे को समझ आ जाता है, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट कि लाला मतलब बीइंग आपके ओनर को समझ नहीं आएगा, या फिर 30-40 ईयर्स को सबको समझ आता है कि बंदा इज मेकिंग अ स्टोरी और नॉट. सो व्हाई टू मेक अ स्टोरी, लेट्स बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी अपफ्रंट. इट टेक लेसर टाइम, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता. सो आई थिंक दिस टाइप ऑफ कल्चर, दिस टाइप ऑफ बोल्ड स्टेटमेंट्स यू हैव टू मेक, यू हैव टू एक्सेप्ट एज अ डिफरेंस, जो आज के एंटरप्रेन्योर, आज की जनरेशन को समझना पड़ेगा कि जस्ट ट्रू टू योर टीम मेंबर, जस्ट ट्रू टू योर टीम मेंबर. एंड सच सुनने की हिम्मत भी रखो. इफ ही हैज नॉट डन एनीथिंग, मतलब ही हैज डन अ मिस्टेक, यू शुड एक्सेप्ट इट, वरना वो झूठी बोलना चालू कर देगा. मतलब अगर mm, आप उसको डर इतना लगाते हो, अच्छा ऐसा नहीं हो तो डर वो, मतलब पीपल शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ यू. मतलब दे शुड रिस्पेक्ट यू, बट नॉट शुड बी, कहते हैं ना वो, इज्जत दिल से होनी चाहिए, डर से नहीं होनी चाहिए. mm. सो दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, दैट काइंड ऑफ कल्चर यू हैव टू क्रिएट टू ग्रो. Got it. My final question, tell us what is the meaning of entrepreneurship for you? How would you define the term entrepreneur, or what are the skill sets that make an entrepreneur? देखो, सिंस आई टोल्ड ना, डू लॉट ऑफ लर्निंग थिंग्स, एंड तो uh, being an entrepreneur is being agile, being as being agile, being adaptive. मुझे तो लोग बोलते हैं लीडर्स आर पंचिंग बैग्स, उसको कोई भी कुछ बोल सकता Mm, है, पर लीडर्स शुड नॉट रिएक्ट. तो देयर आर मेनी क्वालिटीज व्हिच एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव. द फर्स्ट थिंग इज आई थिंक पेशेंस. यू नो लिसन टू थिंग्स बिफोर बीइंग सुपर रिएक्टिव. आज के डेट में आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज मेड अस सुपर इम्पेशेंट कि हमें हर एक चीज विद इन अ क्लिक चाहिए. तो यू हैव टू हैव मोर पेशेंस, यू हैव टू ट्रस्ट people's friendly. मतलब accounts you can have, देखो, in all the departments you can have heads. मतलब you always have heads. HR का head होता है, accounts का head होता है, mm, हर एक बंदे का head होता है, but उन सब के ऊपर भी अगर if you are sitting, तो what are you managing? You're not managing books of accounts, you're managing people. mm, तो entrepreneur should always be people's friendly. मतलब he should always be approachable, he should always be where people can talk their heart out directly, कि whatever the problem is, whatever the solution is. तो ये एक बहुत बड़ी स्किल होनी जरूरी है. पेशेंस इज अनदर वन की, पॉजिटिव अप्रोच. इट्स नॉट कि हमें हमेशा, मतलब कि देयर आर थिंग्स विद पीपल विल पुल यू ऑफ कि नहीं यार ये तो पॉसिबल नहीं है, कैसे हो जाएगा, आपने तो गलत लगा दिया, आपने तो गलत कर दिया. mm, बट नेगेटिव वर्ड शुड नॉट एंटर ऑन्टरप्रेन्योर्स माइंड. उनको लगता है कि नहीं, अगर डिसीजन लिया है तो लेट्स ट्राई आवर बेस्ट, गिव 100% की. एंड हाफ हार्टेडली अटेम्प्ट इज ऑलवेज फेलियर. कि हम सोचें यार इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, डोंट डू इट. mm, So I think being an entrepreneur is always I would say it's always creative. It's always passion. मतलब you should be passionate about it. If I talk about me, I'm super passionate about it. कि ठीक है, we are creating employment as well. अच्छा लगता है कि at the time when fifth sixth को सब सैलरी जाती है, तो we see a lot of happy faces कि ठीक है यार कि it's not we, it's about, मतलब it's not just me, it's about we, कि हम सब मिलकर ही तो कर रहे हैं. Everybody is working for the company. right. एक सिस्टम बनाकर. तो entrepreneur has to be agile, they has to have super patient, they have leadership qualities. की leadership qualities में होता है ना कि उनको listening is more, and then show them, मतलब be with the team, show them कि how things can be done. It's not just order. You have Mm, to be open for to do anything and everything. ऐसा नहीं है कि नहीं यार ये नहीं करना, वो नहीं करना. तो हमारे साथ ये चीज भी एक अच्छी रही है कि
in other organization you'll see seniors कि नहीं मैं I won't do this thing या मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता, but at the same time अगर आप हमारे उसमें देखोगे तो people are open, मतलब they are more say with patience is more emotional strong, emotional intelligence. एक पता होना चाहिए, entrepreneur has to be a good speaker so that whatever we are seeing is properly communicated. होता क्या है कि हम बोलते कुछ है, समझता कुछ है, पहुंचता कुछ है, होता कुछ है। Right. तो आज की डेट में अगर ये बेसिक चीजें, इट्स ऑल बेसिक थिंग्स की आपकी कम्युनिकेशन पहले समझा था ना, सिंपल साधारण शब्दों में समझाया जाए, तो दीज ऑल थिंग्स की बेसिक चीजें ही हैं, बट या एंड लर्निंग नेवर शुड स्टॉप, सो बीइंग फॉर एंटरप्रेन्योर एज वेल, कोचिंग मेंटरिंग टीम की भी करनी चाहिए और अपनी भी करानी चाहिए, या तो ये these things we should always do. Got it. Well, on this note, we will close the session. Thanks for joining us, Mr. Shammi. And it was a pleasure to have you on our platform, and our best wishes for Pansari Industries. Thank you Priya ji, thank you very much, thank you.